So actually, trend verb is not very much practical with present simple, past simple, future. No. But because it is a verb, and you must know that it is a verb, so I have given it. Uh, one round is enough for it, Yes. but this verb is mostly used as a noun. As you are watching, if you go to This song Flipkart, is trending. Flipkart and Amazon, any online shopping, so you can find it trending. This is trend caption. So it's okay, no problem. Now there was only one problem with trend. Okay, so let's move ahead. Sarika, tell me, did I give you any interactive sentence in the previous class? Yes, sir. You gave us one interactive sentence in previous class. Ask the next related question to Aparna. Okay. D, can you tell me what was the interactive sentence? Sarika, the interactive sentence was go to hell. That is bhad mein jao. Idiom. Renu Bhavi, what was the idiom? The idiom was many men, many minds. Ritu, what is the Hindi meaning of this idiom? Many men, many minds. That idioms हिंदी मीनिंग शुड बी नाना मुनि नाना मती, जितने लोग उतने बातें. Okay. Last time I was talking about is it visible to Renu? Yes, sir. It is clearly visible, sir. Nowadays, I am using iPad, so there is no problem. Okay. Actually, we are making some changes in the class. We have got new tube lights fitted here. That's why I'm asking. I can see here one tube light is reflecting. No problem, sir. Okay. No reflection is there. Clearly visible. Can anybody guess the meaning of this infect? Now is the time. यही अभी समय समय है. अब यही समय है. समय यही समय. So let's do some creativity, ladies, with this infected sentence. Now is the time we should take a strong decision against the China. यही समय है कि हमें चाइना के खिलाफ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहिए. Correct. Now is the time to grab the opportunity. यही समय है हमें अपॉर्चुनिटी क्या अवसर लपक लेना अवसर चाहिए. का लाभ उठाना चाहिए. As you reached 50, now is the time to take care of yourself. अब आप जैसे 50 के हो रहे हैं, तो अभी अवसर है अपनी सेहत का पर ख्याल पर ध्यान देने का. ऋतु. Navratri is going on. Now is the time we should activate our 7 chakras. नवरात्रि चल रही है, यही समय है कि जब हम अपने 7 चक्र को एक्टिवेट करें. Okay.
Now listen my sentence, and we are going to play second round. Sarika, listen it carefully because second round will start with you. Now is the time when you can do it. यही समय है जब आप इसे कर सकते हैं. Got it, ladies? Can. Clause. Now is the time when you can do it. I'm making clause. When. Sorry. Okay. Yes, good. So let's play second round with clause. Now is the time when you get up early and exercise nicely. यही समय है जब तुम सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज अच्छी तरह कर सकते नहीं करते हो. It will do. Now is the time. Now is the time to go shopping. यही समय है शॉपिंग करने का. सही समय ये है. 2 से जोड़ने वाला राउंड तुम लोगों ने खेल लिया है लेडीज. अब जरा एक एक सेंटेंस क्लास का बना के देखो. सर अपर्णा, will you make first? Renu, you make. After you Aparna will make. Okay. Now is the time when Shubham, मतलब I'm starting my sentence again. Shubham, now is the time when you can revise your portion quickly. अभी समय है शुभम जब तुम अपना पोर्शन जल्दी जल्दी रिवाइज दोहरा सकते हो. ऋतु. Now is the time when you go out for walking. यही समय है जब तुम बाहर जाके वॉक कर सकते हो. Now is the time when you should cultivate yourself. यही वो समय है जब आप अपने आप को कल्टीवेट कर सकते हैं. करना चाहिए जब आपको कल्टीवेट कर. Now is the time when we live life joyfully. यही समय है जब हम अपनी लाइफ को उत्साहपूर्वक जिएं. Everything is fair in love and Renu, are you making? We have to make now. Okay, after you. Okay. Now is the time when you nurture your kids. यही समय है जब आप अपने बच्चों को नर्चर कर सकते हैं. Now प्रोग्रेस. नर्चर. नर्चर करना मतलब प्रोग्रेस करना, उनकी बढ़ाना, उनको आगे. अच्छा. पोषण करना. पोषण करना. हाँ. पालन पोषण. Nurture verb is also used with the garden. Okay. Now is the time when one can give plenty time to their family. To one's family. One can give plenty time to one's family. यही समय है जब हर एक जन अपने परिवार को काफी समय दे सकता है. अपर्णा, now you. Now is the time is done enough now. yes sir. Yes. Sarika, speak this idiom. Everything is fair in love and war. मोहब्बत और जंग में
सब जायज है। अपर्णा दी। Everything is fair in love and war. मोहब्बत मोहब्बत और जंग में सब जायज है। मोहम्मद। Every everything is fair in love and war. मोहब्बत और जंग में सब जायज है। रितु जी। Everything is fair in love and war. मोहब्बत और जंग में सब जायज। Sarika, what is fair? Sir, fair is an adjective. And what is the meaning of fair? Fair means सही, fair decision. करेक्ट। अब तुम ये इसका पूछ ले जरा। जी। अपर्णा दी, what is fair? Sir, what is the difference of both the fair? वही अभी अपन देखने जा रहे हैं एक एक करके। जी। Fair is as an adjective meaning गोरापन। Okay, what is the Hindi meaning of fair, Renu Bhabi? The Hindi meaning of fair is गोरा, साफ, हल्का. So now what to ask? This one. Okay. What is another use of fair? Ritu? Another meaning of fair? Another नहीं पहले ये पूछ ले। noun here. Okay. fair? What is fair here? Fair is noun here. Okay. What is the meaning of fair as a noun? Hindi meaning. Hindi meaning as a noun is मेला। मेला fair. बोल रही थी ना मेला मेला। रितु ये पूछ लो। Okay, sir. Sarika, what is the fair here? The fair is an adjective here. नहीं देखो जरा ध्यान से। Adverb, sorry. Fair is an adverb here. Aparna di, what is the Hindi meaning of fair? The Hindi meaning of fair is नियमानुसार। Fair. Ladies, is this blue color visible separately? Can you Yes. recognize this is blue? Yes, yes, sir. Now this is the different spelling, ladies. Just whoever is to ask, please ask to the next person. What is fair? Renu Bhabi? Fair is a noun. Ritu, what is the Hindi meaning of fair? FARE? Meaning of FARE is न्यायोचित नहीं। सर वो टिकट में है ना? भाड़ा, हाँ टिकट में आता है। एयर फेयर बोलते ना। एयर Renu, should I erase this one? Have you written? Yes, sir. Yes, sir.
Yes, sir. So we have written. Okay, Sarika, can you tell me which chapter is going on in your batch? Sir, present continuous tense is going on in our batch. Okay, please come to present perfect tense. And Aparna, can you tell me the last sentence of present perfect tense? So the last sentence of present perfect tense is no, I have not present enough English. No, I have not learnt enough English so far. नहीं, मैंने अभी तक पर्याप्त इंग्लिश नहीं सीखी है. Everybody agrees? Yes, sir. Okay. Sir, I have written enough and adequate both. No. I'm asking, it is the last sentence. Yeah, it is last sentence. Adequate. How many sentences you have written till This now? is Eight. fifth one. 8 sentences I Eight have written. sentences. Okay. Renu, ये क्लास हो गया. How many sentences you have written? मालूम इसका क्या अर्थ निकल रहा है? इसमें एक सेंटेंस आगे लगाना पड़ेगा, फिर मजा आएगा. Sir, how many sentences have you written? सुन लो उसका मीनिंग. अब क्लास मिल गया है तो सुन लो. How many sentences you have written are wrong? तुमने जितने भी सेंटेंस लिखे हैं सब गलत है, क्योंकि क्लास में हम प्रश्न नहीं पूछते. प्रश्न नहीं होता है. जैसे वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं? बेटा, वेयर यू आर गोइंग इज वेरी डेंजरस प्लेस. बेटा, जहाँ तुम जा रहे हो ना, बहुत ही खतरनाक जगह है. दिस इज द सेंस ऑफ क्लास. वेयर यू आर गोइंग इज वेरी डेंजरस प्लेस. अब वहाँ हिंदी बदल जाएगा, जहाँ तुम जा रहे हो बहुत खतरनाक जगह है. एक काम करो, इसके लिए एक अपने मन से कोई भी विषय लेकर एक स्पीच तैयार कर, जिसमें फोकस ये रखना कि क्लॉज का प्रयोग. बल्कि एक सेंटेंस हम बोल रहे हैं, जैसे मान लो तुम दूसरे बैच में स्पीच देने आते ऑनलाइन, तो तुम एक सेंटेंस बोलोगे, जब मैंने ये बैच ज्वाइन किया था. जब मैंने ये बैच ज्वाइन किया था. तो ये कैसे बनाओगे? बनता तो है खैर तुम लोगों से. W When extension I से joined the batch, when I हाँ. joined this batch. अब इसमें डिड नहीं आएगा. डिड आ गया तो फिर तो वो क्वेश्चन बन जाएगा. ये है क्लॉज. अगर सीसी ऑन नहीं है तो कर लो. When I joined this batch, I was test, but now I am test. तो वहाँ क्लास की जरूरत पड़ेगी. Okay. Have I given you this sentence? करण ने अपना लक्ष्य स्वयं हासिल किया है. No, sir. No, sir. No, sir. सलमान ने अपना लक्ष्य खुद हासिल किए है. हाँ. सब्जेक्ट हम हाँ. अचानक, सलमान ने अपना लक्ष्य खुद हासिल किया. हाँ, वो एक ही बात. एक पॉजिटिव और एक रिफ्लेक्सिव आ गया, दैट्स ऑल है ना. Have I given you this sentence? लो दूध वाली आ गई. Yes, sir. Please speak English once. Milkmaid has come. Here. Milkmaid has come. Here the milkmaid has come. Okay. खुश हो जाओ, पप्पू पास हो गया है. Okay.
Write No, it down. sir. Who has to make this sentence? Sir, I have to make this sentence. Please go ahead. Ji. This sentence this sentence is having two parts. First part is be present and सारिका, अभी जी बिलोंग को कंटिन्यू करो ताकि ऋतु के जुबान पे धीरे धीरे एस लगाने का अभ्यास बनेगा. जी. First part belongs to be present and the second part belongs to present perfect tense. Firstly, I will take the first part and firstly I will take the main verb and the main verb is be. खुश हो जाओ. Be happy. खुश रहो मतलब होता है ना be happy का तो खुश हो Yes, जाओ. your both statements are right. बी हैप्पी का दोनों अर्थ होते हैं और इसलिए हमने यहाँ पे एक नई चीज ली है. दैट्स व्हाई आई हैव टेकन हियर समथिंग न्यू. Get happy. Cheer up. अच्छा जी. अब सर ये फिर ये हम ऐसा नहीं कि अनजान है दोस्तों, हम केवल शराब के संदर्भ में चीयर्स का प्रयोग सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों में आपने चीयर गर्ल्स को भी देखा होगा गेम्स में. पॉम पॉम लेके वो चीयर करती है. तो जैसे छक्का लगा, कोई आउट हुआ तो वो चीयर करती हैं, गोल हुआ तो चीयर करती हैं. तो द बेसिक मीनिंग ऑफ चीयर इज खुश होना. दिस इज अबाउट. If you want to write down somewhere, you can write down खुश होना. First form is cheer, second form is cheered, third form is cheered. जी. Firstly, I will take the first part and the first part is cheer up. Correct. Order request. जी. Order or request. हाँ. Later on, I will take the second part and the second part belongs to present perfect tense. Firstly, I will take the subject and the subject is Pappu. Later on, I will take the helping verb and the helping verb is has. And lastly, I will take the third form of the verb and the third form of the verb is passed on. Only past. Ji. And lastly, I will put full stop at the end of the sentence and sentence is cheer up, Pappu has passed. Aparna, speak the same sentence. Cheer up. पप्पू has passed. खुश हो जाओ, पप्पू पास हो गया है. रेनू भाभी. cheer up, पप्पू हैज पास्ड. खुश हो जाओ, पप्पू पास हो गया है. ऋतु. cheer up, पप्पू has passed. खुश हो जाओ, पप्पू पास हो गया है. ऋतु, सारिका से पूछना इसका. सारिका, what is the meaning of उत्तीर्ण होना? नहीं बेटा, ऐसा पूछो. व्हाट शुड बी द वर्ब फॉर उत्तीर्ण होना? What should be the verb for उत्तीर्ण होना? The verb for उत्तीर्ण होना should be pass. Aparna di, what should be the second form of pass? The second form of pass should be passed. Renu Bhavi,
what is the spelling of past? The spelling of past is PASSED. Okay, what is the third form of past, Ritu? The third form of past should be past. अब ऋतु Yes. इसका पूछ लो सारिका से Sarika, अनुक्ति what should be the verb for अनुत्तीर्ण होना? The verb for अनुत्तीर्ण होना should be Aparna di, what should be the second form of fail? The second form of fail should be failed. Renu Bhabi, what should be the spelling of failed? The spelling of fail should be FAILED. What is the third form of fail, Ritu? The third form of fail should be failed. Sarika, what should be the fail? What should be the verb for fail here? बेटा ये वर्ब नहीं है नहीं. पूछो What व्हाट इज is फेल the व्हाट what इज is फेल what is fail here? The fail is a noun here. Aparna Okay. di, what is the meaning of fail? The meaning of fail is asafal. is this green color visible to you ladies? Yes, sir. It is. Yes, sir. Renu Bhabi, what is failure? Failure is नाकामयाबी, असफलता. What is failure? Okay, failure is a noun. Ritu, what is the Hindi meaning of failure? The Hindi meaning of failure is asafal. नो बेटा देखो जरा ध्यान से Asafalta. Sorry.